गुलनीत कहाँ जा रहे हो आज? अच्छे से जा रहे हैं कैटलीना आइलैंड दोपहर के टाइम। पहले तो ਅਸੀਂ सोचा ਸੀਗਾ कि अगले वीकेंड जावांगे पर ਅਸੀਂ क्या कि इस वीकेंड जाते हैं क्योंकि इस टाइम क्राउड घट होएगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। गुलनीत किसकी एक्टिंग कर रहा है तू ये? लेबर डे का लॉन्ग वीकेंड है तो ऐसे जा रहे हैं बीच अर्ली मॉर्निंग। यार सा बच्चू तू। Hello everyone, welcome to our channel. Today we are at Long Beach. We're gonna get a ferry from here and then we are going to go to an island called Catalina Island. I am so excited. So we're at the parking. We're gonna go to the ferry and then we're gonna go in the island and I'm so excited. So let's go. And wake mode on! So now we are in the lane for the ferry and it's bigger than the one we went in San Francisco. I'm so excited and I can't wait to go on it. And how long will it take, Dad? बस अब स्टार्ट करने वाले हैं। Okay. I'm so excited. हाय हाय पार्टी। नो गुलनीत। I want it. So guys, we have started and the ferry is going towards the Catalina Island. It's sailing towards the Pacific Ocean and the weather is sunny, it's warm and it's perfect for the cold breeze that's touching my face. It's so relaxing. It's a very good experience. गुलनीत देख क्रूज आ गया। Wow, how big is that cruise? देख इसमें कितने सारे फ्लोर हैं। I think it's 6. 6 or 7 फ्लोर इट हैज। तो देख ले पूरे समुंदर में ही होटल बना दिया है इन्होंने। Wow. Will you take me to vacations on a cruise? हाँ, हम एक वीक का हम भी प्लान बनाएंगे। लोग काफ़ी प्रेस करते हैं क्रूज। देखा चारों तरफ पानी पानी हुआ पड़ा। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है ना। मम्मी को लेके आना था यहाँ पे। मम्मी कहती मैं नहीं जाऊँगी पानी के अंदर। हाँ, बड़ी किश्ती दे अंदर। ऐसा बड़ी किश्ती और छोटी है वहाँ पटना साहब। छोटी किश्ती मेरी बैठी। यहाँ इतनी बड़ी किश्ती है, चारों तरफ पानी ही पानी है। हाँ कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा भाई, कहीं जमीन दिख रही हो। हाँ, इतनी दूर ले आए हो। मम्मी को ले आना था यहाँ, तब आता स्वाद सही। सही बात है।
So we have reached the island. It's very beautiful, and there are people parasailing, and I have planned to parasail. But if we don't get a slot in the parasailing, Dad has promised me he's gonna make me have the parasailing experience somewhere else when we're near a beach. So guys, this is our cart we're roaming around with. So we are at a point called Three Palms Overlook. You can see the entrance of the island, and you can see the boats, and then we can see the ocean and the mountains. It's so beautiful and scenic. सवारियां बैठी हैं ऑटो पे और ड्राइवर ही नहीं आंदा पिया पिछले हफ्ते रिक्शा चलवा दिया इस हफ्ते तुमने ऑटो चलवा दिया क्यों गुलहीर कौर जी सारी मजदूरियां करके देख लो यहाँ पे हाय छोटी सवारी आपके क्या हाल है छोटी सवारी नाराज चल रही है क्या बहुत छोटी सवारी नाराज है क्या छोटी सवारी मुंह सुझा के बैठी है छोटा सा ये And I'm the conductor here. I tell all the map areas and everything. And the driver is also the cameraman right now. पापा अभी कभी आइलैंड पे गए हो या ये पहली बार है आपका? नहीं आइलैंड पे तो मैं एक बार गया हूँ पहले इंडिया में जब मेरी पहली जॉब लगी थी वो मुंबई में थी तो मुंबई मैंने पहली बार ओशन देखा था और मुंबई के पास ही एक आइलैंड है जिसको एलिफेंटा केव्स कहते हैं वो एक आइलैंड के ऊपर है नाम से तो ये लगता है कि एक्सपेक्टेशन जब हम गए तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हाँ भी अजंता एलोरा जैसी अच्छी होगी बट मतलब इतनी खास नहीं है बट हाँ फर्स्ट एक्सपीरियंस था जैसे आज हम एक क्रूज़ या फेरी पे आए ऐसे ही मैं मुंबई में फर्स्ट टाइम क्रूज़ फेरी में बैठा था ओशन के अंदर गया था तो हम वहाँ गए थे और आई थिंक मम्मी ने जो मेरी पहली फ़ोटो देखी थी वो भी उसी फेरी के ऊपर खड़े हो गई थी जिसमें पीछे ताज होटल दिख रहा था और मैं खड़ा था तो वो एलिफेंटा केव्स के मेरे ट्रिप की थी जो आइलैंड पे था Right. That was my first island trip. This is not my first island trip. Okay, I was just doubting because you crashed my drone. Maybe it's your and it was your first time flying a drone, and maybe this time it's your first time on an island. So yeah. Yeah, you can think. But that island is not so like beautiful and large like Just this. like this one. Yeah, that was a small island. Like there are lot of temples. वहाँ बहुत सारे temples हैं. इसमें शिव जी की मूर्ति है. I think. But वो सब अब I think जो पुर्तगाल वाले आए हैं उन्होंने शायद उनको डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने आई थिंक उनको संभालने की कोशिश किया अब आई थिंक वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुई है जो एलिफेंटा केव्स है तो बट अभी इतना कुछ खास वहाँ बचा नहीं है बट स्टिल या इट्स अ गुड डे आउटिंग फ्रॉम मुंबई वेयर यू कैन गो सो ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ Which is called? which is the next which one It's empty. it's botanical garden where we will make a stop Okay, botanical garden. Cool. okay go bye bye
guys, as you can see, it's evening and it means it's getting colder and darker, and it also means that we are going aboard our ferry to get to Iran. So this was the end of our vlog. Hope you like it. Don't forget to give this video a huge thumbs up, hit that subscribe button, share this video, and comment down below. Don't forget to press the notification bell. Ting! Bye bye.